नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, इन सत्य स्वरूप वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच क्वेस्ट द चार्जशीट अगेंस्ट द एप्लीकेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज्ड अंडर सेक्शन 509 IPC इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। एक केस था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के AGM के अगेंस्ट ये शिकायत थी कि उन्होंने रिव्यू मीटिंग के दौरान किसी महिला कर्मचारी को से अभद्र अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और ये केस नागपुर हाई कोर्ट बेंच में था, जिन्होंने उसको क्वेश कर दिया। पूरी बात देखते हैं कि क्या मामला था। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एलिज्ड रिमार्क मेड ड्यूरिंग स्टाफ रिव्यू मीटिंग कन्विंस द कस्टमर एज यू कन्विंस योर हस्बैंड, though disgraceful, was not uttered with the intent to insult the modesty of the complainant. ये disgraceful था, but was not uttered with the intent to insult the modesty of the complainant. केस क्या था, पूरी बातें देखते हैं। The complainant, a senior clerk at State Bank of India, Bhandra, lodged a complaint against the applicant for allegedly insulting her modesty. She alleged that on 11th August 21, during a review meeting, the applicant dissatisfied with her performance, reportedly remarked, "You should convince the customer as you convinced your husband." The FIR also mentioned subsequent incidents on 28 August 22 and 16 September 22, but no similarly offensive gesture or remarks were attributed to applicant. The applicant sought to quash the charge sheet, arguing that the essential elements required to establish an offense under section 509 IPC were absent. He further claimed that the remark was made in the context of the formal review meeting aimed at improving the complainant's performance and was not intended to insult her. Furthermore, FIR was lodged in 13th November 22, more than a year after the alleged incident, and no reasonable explanation was provided for delay. Court observed that section 509 requires the intention to insult the modesty of a woman and the act of insulting her through words, sounds, gesture are an invasion of privacy. It noted that there was no intrusion on the complainant's privacy and that the applicant's intention to insult her modesty was not evident. Considering the purpose of meeting and reasons to utter such words during the meeting do not show any intention of applicant to insult the modesty of the complainant, court observed. Therefore, court quashed charge sheet against the applicant, observing that the essential ingredients for a charge under section 509 were not met, and held that even if the allegations in the FIR were taken at the face value, they did not constitute an offense under section 509 of IPC. फ्रेंड्स, जहाँ तक कमेंट की बात है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स को भी थोड़ा ग्रेसफुल होना चाहिए और मर्यादापूर्वक, गरिमापूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, चाहे पुरुष कर्मचारी हो। ऐसा कोई भी कमेंट ना करें जो उन्हें हर्ट करे अथवा उनके जेंडर पे कोई इस तरह की आँच आए जो उन्हें खराब लगे अथवा सोशली रूप से वो खराब हो। सो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव हमारे को चाहिए कि मीटिंग के दौरान ग्रेसफुल रहें और शब्दों का चयन गरिमा में पूर्व करें और मोटिवेशनल मोड में काम करें, न कि डिक्टेटरशिप की तरह काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।